Good afternoon to all. I hope all of you are well and safe and you already enjoyed your vacation. Now, I'm just going ahead with quick revision what we did in the previous lab session and what we will do in this lab session. So, we are working with the practical 4, that is the small project using Laravel, right? And in that we discuss this thing till here. We discuss everything like how to create the menu bar, how to create the listing page. Okay, this listing page is nothing but we are fetching our data from the database. Okay, then we move towards the add restaurant. Okay, and there we will performing here insert operation, right? So remember one thing, whenever you work with the Laravel, so first step is you have to create a view. Okay. Why? Because you need something here to display to your user, right? So first step is you have to create a view. Okay. My view is created now. Now what I have to do when I just submit this data, at that time some logic I have to put. So for that, what I can do, can anybody tell me? If this submit button is clicked, at that time I have to place some logic like this data is inserted into my database, right? So that logic I have to place to where? Insert the data into database. Yes, that operations we are performing, but we need some function. Inside that function we have to write our logic. Yes or no? We need a function or not? Yes? Yeah. Okay. So that function we always have to place to where? That you have to place inside your controller part. Okay. The three important thing is there. One is a model, view and controller. That is Laravel is working around this three different component. One is a view that you already created. Another is a controller where you are just pasting here your different logic and creating different functions, right? And apart from that, one model is there. So what is the use of model? Why we are using the model? Can anybody tell me? Like here you can see we are importing the model, but what is the use of it? What is the use of model? To access the database, yes, very good. If we are going ahead with the traditional approach or query builder, where we have to write the different queries and joining related operation become too much difficult for us, then what is the simplest way? You can use the model. You just create the model. Okay, a simple function is that php artisan make colon model and then just give the name of it. Okay. Yes, very good. Okay, so model is always used to access your database. Either you want to perform read operation, update operation, or delete operation, whatever the operation you want to perform. For that, you require the model. Yes, very good. It executes your queries very easy way, very efficient way. Okay, in Laravel, if you are using the model, then you don't need a very complex configuration part, right? Only what you have to do, like just going into the model here, our restaurant.php model we already created, right? So this model is referred to which table? We just have to mention this only. Okay, so here we are just referring to our restaurant table. So just go back to your database. So here restaurant table is there where ID, name, email and address is there. We insert the data through this. Okay, we are inserting the data here, and when we just click on the submit, your data is submitted in your database. Okay, so these operations we already perform. I'm just giving a demo of it.
And then what we have to do in this lab session that I'm saying to you is I'm just going to add random data. Then we will delete this random data afterwards. Okay, so as I submit this data, I already create a function for it. Let me show you that function, but just to see this data is inserted or not. Okay, this data is inserted, that is XYZ Ahmedabad. But whenever you work with the real time, at least some alert box are there, like your data is inserted successfully, or those kind of alert box are there. So we in this lab session, we are putting that alert box using session flash, or we can say a flash sessions we are using here. Apart from that, we need to add it and delete this data. So we are putting here the buttons like add it and delete. That operation we will perform. Then we quickly move to the login and register page. And then after, at last topic is the middleware. So this is the agenda for entire today's lab session. I already upload this entire code in your classroom. You can refer it. And what you have to do in your project, you just, here I'm just going ahead with the restaurant data. Okay. You can go ahead with any other kind of data like cosmetic products, clothes, or those kind of data. You can use it and you can create this entire project. Okay. But first you have to understand it. Okay, till here we discussed these things. Okay, I'm just revising this insert or add, how to add your data in your database. That function is here. Okay, so what I'm doing here, this restaurant is my model. I'm creating one instance, or we can say a object of it, that is the dollar resto. What I'm doing here, when user, just a second. Okay. When user input the data here, that data I have to fetch, okay, and then after I have to store it inside my database. So what I am doing here, whatever the data is input by user, how I can access it? So for that, you already know this input function is there. So name, email, and address, that here in right hand side, that is the input by your user, and you are storing it into your model object. Okay, and after that, only this entire one statement will insert your entire data, because जहां पे डॉलर रेस्टोरेंट है वहां पे आपका नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, एड्रेस भी आ गया. अब ये तीनों चीज आने के बाद आप क्या करोगे, उसको डेटाबेस में इंसर्ट करोगे. अब कैसे इंसर्ट करोगे? सो फॉर दैट you need only one function, that is the save function. So this way, in very simplest way, you don't have to write here insert query, like insert into the table name and the values you have to provide here. Just using this simple function, you can insert your entire data. And then after, we are redirecting it to our listing page. So these things we already did in our previous lab session. Till here, anybody have any doubts? Or from the first lab session, you can refer the previous videos also. Okay, if you are absent in any of the lab session. Is there any doubt till here, students? What about the other students? Sagar, then Sharin. And in between, if you don't understand any of the sentence, make sure you immediately ask me. Okay, fine. Now, what I have to do here, when I submit the data at that time, I want to use one flash session. Now, what is this flash session? So many times you use this in real time, like whenever you just perform any operation, one alert box is there, and inside that, like one message is display, like your data is inserted successfully or your data is updated successfully. Those kind of message I want to display. Okay. So for that, what I have to do, so after saving and before redirecting it to your listing page, what you have to do here, you have to create here a flash session.
Now, how you can do this thing? So remember one thing, whenever you work with the session, you have to first use that session, means import that session. Okay. So this thing don't forget. Otherwise, you may get error regarding the session. Okay. So whenever you use any new things, at least import those things. So I already import the session. Now I can use it successfully. So how I can create my flash session? Okay, I'm just pasting here one comment like flash session. You can omit this part, but for the user's conveniency, we are just using this. Otherwise, you can just omit this part. Okay, so REQ, that is my object. Okay, I'm using this. Then after session function is there, and inside that session function, one flash function will be there. Okay, so this way you can go ahead with this. Okay, so this function will help you to create a flash session, and inside this you have to pass the status. Like maybe this thing is happened, in some of the case your data is updated, in some of the case your data is deleted, in some of the case your data is updated. So every time your status is different. In each and every function, your flash session, your status is different. So what I'm doing, I'm just passing here my status. Now here, this is my add function. So add means I'm inserting my data. So likewise, you can give the appropriate message like your data or restaurant submitted successfully. Those kind of restaurant submitted successfully. Okay. So what I'm doing here, I'm just creating flash session for the user convenience, so that when I insert the data, user at least get to know, okay, my data is inserted successfully. Okay. And for that, I need to import the session. Just a second. Okay, here. This statement you have to write compulsory, otherwise you will get the error. Okay. So I create this flash session. Now, in my here in my GUI, how I can display it? So I just want to display it in the alert box format. So you already know we are not starting designing from the scratch. So what we are doing here, we are using the Bootstrap alert. Okay. So like this way, this kind of alert box will be there. Like here, this way, your data is successfully inserted or updated. Here, that kind of message will be updated every time. So I'm using this one because it has a close option also. There are lots of examples are there. Like this is again another. These all are the other, but I'm using this one. So what you have to do, you have to just copy this entire thing. Now, where you have to place it? So when user submit the entire data, and when it redirect to in my listing page, here when I just redirect to my listing page, so here one alert box will be there like your data is successfully inserted, right? So where I have to go, in my list.blade.php, here you can just see the path. Okay, that is the list, and I have to go inside that part. So just go to that part. Okay, here, that is the list.blade.php, and before my table I have to display this alert, but I have to check the status. Like if my session, I have to get the status of it, like it is set or not, because every time the status is different. It may be delete, it may be update. So I have to check my status, and inside that, if it is set, then if, and inside that, I'm just putting my alert here. I'm just whatever the code I copy from this particular entire website, I'm just pasting here. Okay, here this is the prefix text that I don't want. What information I want, that is my this status.
So remember one thing, whenever you are using the directives, at that time you have to use the double curly bracket. Okay, and inside that you can put your status. And here, instead of warning, I just want to go ahead with the success. Now what does it mean? So whenever you create here a flash session, so you are passing here the status and the message like restaurant submitted successfully. So this data is passed here inside your list.blade.php, and it will first check it out my status, like what is my status, and according to that my messages display here. Okay, like either it is a inserted, either it is a delete, or maybe update. And this entire code is same as it is in your website. So here we are not changing anything, but I just change here success. Alert success is used for green color, alert warning is used for the red color. So I don't want this kind of color, I want green color. That's why I just change the class. So till here, is there any doubt, student? What is this session? Okay, one thing that you have to remember, whenever you are working with the controller part, so here you already import your session. Okay, so you can use the session function here, but here in list.blade.php you cannot directly use the session function. So what you have to do, you have to globally use that package, that is the capital S and session, and inside that get method is used to get your status. Whatever the status are there, it will display the message here. Okay, I'm just giving you 1 minute. If you have any doubt till here, just raise your doubt right now, because this code we have to copy for edit and the delete. Okay, so if you have doubt here, just let me know. And this one is nothing, we are just copying this alert box from the bootstrap. Okay, so wherever you find this kind of class, don't worry about it, we just copy it from the bootstrap, nothing more than that. Okay, interpret it. And if you have any doubt, then just let me know. Okay, clear? Yes or no, clear? Okay, fine. Just check it out, it is working or not. So I'm just going to my add restaurant. I'm just adding some entry here, whatever the entry you want to do. Okay, whatever entry you want to give, that is up to you. Okay, as I submit, give some time. Okay, just check it out. What is the error are there? Okay, somewhere semicolon is missing. Okay, inside this list.blade.php file. Okay, here one closing bracket is remaining. Fine, that's it. Nothing more than that. So they are also saying a very smart error also. We can easily predict it.
Okay, I have to again add it. Okay, as you can see here, this is called flash session. Now, what is this flash session? Why just I create this entire flash function and all this thing? So when you close it, definitely it will close and it will not, for example, if we refresh it, so it will go. Okay, it is not coming continuously. It is coming only one time after you adding or inserting your data. So that is called the flash session. Okay, flash session is always used whenever you just perform some operation and after that you want to display any message. So again, if you refresh it, it will go away. Okay, so that is the main benefit of flash session. If you are only using this alert box, so every time you have to close it. Okay, every time whenever you refresh it, it will display. It will not immediately or uh, automatically just remove. Okay, so that is the benefit of flash session. जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो एक ही बार आपको डिस्प्ले होगा, बार बार आपको डिस्प्ले नहीं होगा. So that is the benefit of the flash session. Okay, fine. Now, what is our next task? We need here edit and the delete operation, so that from here I can just edit any of the data or I can delete any of the data. Okay. So for that, what I have to do here, I have to go into the list page and after address, I'm just adding again another TD and I'm just placing here TH. I just copy it from here. Okay, I just copy it and I'm just passing here, that is the operations. Operations, maybe it is edit or delete. And after that, here, I have to create one TD. Okay, and inside this TD, I have to place here edit or delete buttons, whatever you want to go ahead. Either you want to add a button, then it is also fine, or if you want to go ahead with the icons. So everybody know the font or some icon is there, right? So if you want to go ahead with that part also, that is a very good thing. So that is up to you. If you want to add here a button, then it is also fine. And if you want to go ahead with any icon, then it is also fine. I'm just using the icon here, that is the font awesome icon. And if you want to use this font awesome icon, then you need to include this style sheet in your layout.blade.php file. So why I'm not just including in any one file, because every time I'm extending this one. So this is a very good thing that we create a layout. Okay, so inside this layout dot blade.php file, I'm just pasting that file. Okay, now this file is linked. Coming back to the list.blade.php. Now how I can use this edit or delete icon. So for that you have to, if you want to go ahead with the car icon, then you can use it. So I'm just copying this code. Okay, pasting here, but I don't want the car, but I want a delete for trash. We can use the trash word for the delete, and same way for the edit we can use the FA edit icon. How you get to know this thing? So for that you have to go ahead with the documentation part of it, and you will get all those kind of name for it. So don't worry about it. You will definitely find these things. Okay, and for the A tag, I need href. Same way here also. Okay, I'm just coming back to my page and just refreshing it.
Okay. So as you can see here, my delete and the edit options are already there. This is for the delete one and this is for the edit one. You can just resize it. That is up to you. You can place here a space also. That is up to you. But I just want to tell you, is it clear how you can add these icons? Um, in this project you are learning a lot of things apart from the CRUD operation, how you can just go ahead with the flash session, how you work with the middleware, how you can go ahead with the GUI part. So apart from the CRUD operations, you are using all those different modules also. So this way you can go ahead with the icon part. Okay, now what is my next step? यहाँ पे मैंने एडिट और डिलीट आइकन है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जब भी मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगी, यहाँ से ही मेरी पूरी की पूरी एंट्री डिलीट हो जानी चाहिए एंड आई कैन सी दी अपडेटेड डेटा हियर। डेटाबेस से भी वो डिलीट हो जाएगी और यहाँ से भी वो डिलीट हो जाएगी। मुझे एक चीज ये आपसे पूछनी थी कि अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो उसके लिए मुझे कोई पेज बनाने की जरूरत है या नहीं? If I just click on this delete, then it is required to create a delete page or not, or only the function is sufficient. Tell me. Generally, the approach is that we are always creating a view for it. So we are creating one page for it. So for delete operation, is it required to create a view or any page? Very good. Function is only sufficient. You don't require any page. When you require page, for example, you want to edit some data. Okay, so edit required one view, one page where I can just update my data. So that in that case, I want a view or a page. But here in delete, I don't require any page because as I click on delete, my data or entry will be deleted. Very good, student. So what I have to do? I only want to create a function inside my controller part. Okay, so I'm coming back to my controller and I'm just creating one function. Okay, yes. Function delete and what is my argument? यहाँ पे request dot dollar req है, वो request argument is it required here in delete or not? अब आपको ये चीज याद रखनी है कि request आर्ग्यूमेंट कब आपको आर्ग्यू ऐसा कोई भी फंक्शन है तो आप आर्ग्यूमेंट में ये रिक्वेस्ट वाला है वो कब दोगे? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, whenever you want to insert any data or whenever you want to request to your server that I want to insert this data or I want to update that data, okay, or either you want to put that data in your database, at that time you require this request as your argument. But in delete we are just removing that data. So here that this request dot or this request dollar req is not required, then what is the required as an argument? Now अब यहाँ पे अगर आप ये वाला बटन क्लिक करते हो तो ये वाली एंट्री डिलीट होनी चाहिए, ये वाला बटन क्लिक करते हो तो ये वाली एंट्री डिलीट होनी चाहिए. देन हाउ यू गेट टू नो? वेरी गुड बालकृष्ण, दैट इज द आईडी ऑफ योर रो. Why it is required? Because there are lots of delete icon are here. Okay, how you get to know or how you differentiate it? So everybody have a different id, like as you can see, id is your primary key and every row has a different id. So what you have to pass here, you have to pass your id here. Okay, so remember that thing. So I'm just passing my dollar id here. Okay, and first thing that you need to find which button is clicked, like either this button is clicked, either this button is clicked, which button is clicked. So for that find method is there. Okay, so I'm just like a restaurant, that is my model name. Okay, this one, and scope resolution operator is always used, so use that. Then after I'm just finding the id, which id that is clicked by my user.
Okay, this ID that is always passed whenever user click on this one. Okay, so pass that ID in your link also. And apart from that, which function is used to delete? So I have to delete this one. So delete function is used to delete this entire entry. तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या कहना चाहती है कि जब भी कोई आइकन, डिलीट आइकन के आप क्लिक करोगे, तब वो आईडी यहाँ पे आएगा और वो आईडी डेटाबेस में जहां पे होगा वो फेच करेगा, उसको वो सर्च करेगा और उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा. सो दैट इज द मेन थिंग हियर. ओके, सो आपकी एंट्री है वो डिलीट हो गई. अब क्या करना है आपको, फ्लैश सेशन है वो देना चाहिए कि यस मेरी जो भी एंट्री है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई. तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप कॉपी कर लो और पेस्ट इट. ओके, और यहाँ पे क्या करोगे, रेस्टोरेंट डिलीटेड successfully. That kind of message will be displayed here. And after deleting, what you have to do, you have to return to your listing page. That's it. So there is no major thing is here. Okay, so this is the code for your delete function. Okay, but will it work? Yes or no? Will it work? अभी आपका एक स्टेप बाकी है. फंक्शन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है. आप कैसे कॉल करोगे, लारावेल में फंक्शन कैसे कॉल करते हो आप? Have you called this function, this delete function? If this function is not called, then this entire operation is not performed. Yes, so for that you need to create a route for this. Okay, so remember one thing, always whenever you want to call any function, you have to go to the route, and that is the web.php file. Very good, students. Okay, so what I'm doing here, I'm just creating one route for it. Okay, so get is sufficient. We are not posting here any data. You can copy this one and paste here. Okay, instead of list, I want to call the delete. And apart from here, I just want to go ahead with this path, that is the delete. नाउ यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप डिलीट करते हो उस टाइम पे आपको यहाँ पे आईडी भी पास करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, आईडी इज ऑल्सो पास ऑटोमेटिकली. Okay, so when you create a route for it, make sure you pass the ID here, otherwise it will not fetch and it will not correctly delete your entire entry. Okay, so this is the entire path that is used to delete your entire entry. Okay, so remember one thing, when you work with the edit and delete part, you need to pass the ID, and this is your one section is there in your entire syllabus, that is the passing the parameter through routes. Okay, that concept is used here. Okay, so this way you already called your entire delete function. Okay, now what you have to do, coming back to the list.blade.php file, यहाँ पे आपको href में जहाँ पे delete वाला है आइकन, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, तभी वो डिलीट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट डिलीट. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, delete slash, and here you have to pass the id. But how you can pass the id, so how you can just fetch this name and item and all this thing. So id is already here, as you can see, id is already here, just copy that one and paste here. So this way you can pass the entire id. Okay, as of now what I'm doing, I'm just returning this one and just checking out. Okay, refresh it. Okay, I'm just deleting this one entry.
abc@gmail.com. Okay, just check it out. Undefined variable. Which variable is undefined? As you can see here, my ID is coming successfully. Uh, in which file? REQ. Okay, just a second. Okay, what is the error here? Here we are passing the REQ, so it is not giving an error. But in delete function, we don't have this $REQ. So what we can do here, we can use directly the session one. Okay, so just remove this one and you can use directly this session capital S. Okay, you don't require the curly bracket, and instead of array you have to give the scope resolution operator. That's it. That is the updated version here. अगर आप REQ यूज करते हो देन यू कैन यूज द सेशन फंक्शन. अगर आपके पास REQ और रिक्वेस्ट वेरिएबल नहीं है तो आप कैसे यूज कर सकते हो? डायरेक्टली यूज द सेशन ग्लोबल वेरिएबल, use the scope resolution operator and flash function as it is. Okay, so ये दोनों difference है. So ये याद रखना, भूल मत जाना, otherwise it will give you REQ related error. Okay, just check it out. Okay, again. Okay, fine. I have to pass this one. When I call this function inside this one, list.blade.php file. Okay. Go to web.php file. Okay, just a second. ओके, डिलीट यहाँ पे अपने आईडी पास कर दिया, एडिट डिलीट फंक्शन भी हो गया, आईडी तो पास किया है आपने. list.blade. Coming back to this one. ओके, यहाँ पे आपने आईडी पास किया है इसलिए ये एरर दे रहा है कि जो आपका फंक्शन है वहां पे अपने $ID दिया है, बट यहाँ पे आप उसको कॉल करने के टाइम पे आईडी पास नहीं कर रहे हो, इसलिए ये एरर दे रहा है. जस्ट अ सेकेंड. Okay, just a second. I'm just refreshing it. Okay, that entry is deleted because due to that error, you cannot see that thing. So that's why it is saying that call to a none argument.
I'm again going to conduct it. Okay, as you can see here, my restaurant deleted successfully and that entry is also gone. Okay, again delete this XYZ115. Okay, you can see here that entry is also delete. So whatever the unnecessary entries are there, I'm just deleting it through this one. And we also check the database like my entry is deleted. Okay, this one also. So 112 is the right entry. Till that we deleted everything and we also check it out the database. Okay, my this entry is also deleted successfully. Okay, so I have a different rows here. So just check it out. All those entries are deleted or not. Whatever the error is coming previously, that is due to because we already deleted and then after error is coming. So it is already deleted from the database. So that it not find any ID. That's why that error is coming. So don't worry when you get this kind of error, you just refresh it and start going ahead with the again that's operation. Okay, as you can see, my all the unnecessary entries are deleted successfully and my flash session is also there. I can close this one. Okay. So is there any doubt in the delete operation? Yes or no? Any doubt, students? What about the other students? Vicky Kumar, Nikhil. Okay, fine. Okay, fine. So delete operation is completed. Now we are moving ahead with the update one. अब जो भी एंट्री है उसको हम कैसे करेंगे, अपडेट करेंगे. तो उसके लिए क्या होगा कि डेफिनेटली वी नीड टू क्रिएट वन व्यू फॉर द एडिट. सो जहां पे हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा एक फॉर्म आ जाएगा जहां पे मेरी जो भी एंट्री है वो आ जाएगी. उसके बाद मैं उसको अपडेट करूंगी और फिर से सबमिट करूंगी. तो आधा ऑपरेशन है दैट वी ऑलरेडी परफॉर्म इन दी insert part. Okay, so what we are doing, when I just click on the edit part, one form will be displayed and that must not be blank form. ओके यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म नहीं होगा. कौन सा फॉर्म होगा जहाँ पे ये अगर मुझे ये रिकॉर्ड एडिट करना है तो ये वाली एंट्री पूरी की पूरी फॉर्म के जो भी फॉर्म हमने बनाया है उस फॉर्म में पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा. ओके, सो वो हम कैसे करेंगे तो देखते हैं. चलो पहले हमको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा. सो वी आर क्रिएटिंग वन व्यू दैट इज द edit dot blade dot php. इसके अंदर हम क्या करेंगे तो ये हमारा फॉर्म है वो सेम एज इट इज जो add.blade.php वाला है वही है. तो हम पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं. सो वी कैन सेव अवर टाइम ऑल्सो एंड पेस्ट हियर. ओके, बट ये पूरा का पूरा फॉर्म कौन सा है, ब्लैंक फॉर्म होगा. बट हमको क्या करना है कि जब भी मैं एडिट पे क्लिक करूं तो जो भी एंट्री में डिलीट करना और एडिट करना चाहती हूँ वो पूरा का पूरा डेटा मेरे फॉर्म में आ जाए. तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए हमको राउट बनाना पड़ेगा. सो वी जस्ट गो टू द web डॉट php. वी क्रिएट द राउट फॉर इट. तो दिस राउट गेट. ओके, edit and edit because my name for the edit.blade.php. So I'm just giving here edit. I'm just checking out if I'm just giving here edit, it will display or not. My form is display or not.
It takes time. Just a second. Okay. Okay, I'm just restarting my server. ओके, यहाँ पे हमको एडिट लिखना पड़ेगा. Okay. So when I work with the edit part, what happened? I have to pass the ID also. This is only not a requirement. So what I have to do here, I also pass like same as it is in the case of delete. I have to pass here a ID also. Otherwise, it will not display properly. So what I can do here, I'm just passing the ID. Okay. So every time, whenever you work with that, and then after I have to call this edit function. So that way we can go ahead. So I have to create this edit function, and inside that edit function, I will call this view. Okay, so that way we can go ahead. Otherwise, it will give you error because ID is not there and route is not again found because of this reason. So what I'm doing here, I'm just creating the edit function. So where I can create the edit function, just copy this entire delete वाला जो भी कोड है वो कॉपी कर लो, paste it again, edit. Here also we require the ID, right? Because which button is clicked, we don't know. So for that, we need to pass the ID. Okay, inside this, we have to write some code like we need to find the ID, whatever the ID we find, we are storing it into the one variable. Why? Because we need to pass this data inside our view. Okay, so I'm just storing this data. Okay, just go ahead with the written part, what it is returning. Okay, as of now, I'm just commenting this one. So what I'm doing here, whatever the ID I'm getting, it is returning or not. And again, here inside this list.blade.php, we need to this give the href here. Okay, and just check it out. Just a second. I'm starting my server. I'm just going to the local host. 8,000. Okay, now it is working well. Going to the listing part. Okay, going to the edit one. So this is my 101. So it is coming 101 or not. It is returning my ID successfully or not. Yes, this entire row I can fetch here. As you can see, this entire row is fetched successfully from my database. Okay, अब मुझे ये क्या करना है, जो भी मेरा डेटा आया उसको मुझे फॉर्म के जो भी हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ है वहां पे नेम की जगह या ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो होनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये edit.blade.php वाला पूरा का पूरा व्यू बनाया. यहाँ पे मैं क्या करूंगी
कि ये जो ब्लैंक अभी ये इनपुट बॉक्स है वहां पे मैं वैल्यू दूंगी और ये वैल्यू कौन सी होगी, जो भी आप क्लिक करोगे वो डेटा यहाँ पे फेच होगा। बट वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको जो ये डेटा आया आप देख सकते हो यहाँ पूरा का पूरा डेटा आ गया है सक्सेसफुली। कैसे आया, यूजिंग द मॉडल दैट इज माई रेस्टोरेंट, आई कैन फाइंड द आईडी थ्रू दिस फाइंड फंक्शन। सो ये पूरा का पूरा डेटा है वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी, दैट इज माई डॉलर डेटा। ओके, और ये डेटा मैं पास करूंगी मेरे व्यू में, ताकि मैं व्यू में इसको यूज कर सकूं। ये हमने पहले भी किया है यहाँ पे, एज यू कैन सी इन लिस्टिंग पार्ट वी ऑलरेडी डिड दिस थिंग। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये डॉलर डेटा है वो मैं पास कर रही थी। सेम थिंग वी हैव टू परफॉर्म हियर। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट रिटर्निंग द व्यू। कौन सा व्यू रिटर्न करना है, जो हमने बनाया है वो कौन सा है, एडिट, edit.blade.php, राइट। सो दैट इज द एडिट। ओके, उसके बाद मुझे कौन सा पैरामीटर पास करना है, तो पैरामीटर में डेटा पास करना है। और डेटा कौन सा है, दैट इज स्टोर इनसाइड द डॉलर डेटा। ओके, ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे मॉडल के थ्रू मेरा यहाँ पे डेटा आया उसको मुझे व्यू के फॉर्म में अच्छे से फॉर्म में डिस्प्ले करना है। इसलिए मैं यहाँ पे ये डेटा पास कर रही हूँ। दैट इज द मोटो व्हाई आई राइट दिस एंटायर लाइन। इज इट क्लियर एवरीबडी टिल हियर इनसाइड द एडिट फंक्शन। मैंने पहले क्या किया कि जो भी डेटा है वो यहाँ पे फेच किया और ये पूरा का पूरा डेटा है मैंने पास किया व्यू में, ताकि मैं व्यू में ये पूरा का पूरा डेटा है वो फेच करके वहां पे डिस्प्ले कर सकूं। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट टिल हियर। यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर है। ओके फाइन। अब मुझे क्या करना है, go back to your edit.blade.php file, that is my blank, these all are the input, that is the blank, these all are the blank input, right? So what I have to do here, I have to place the value here. ओके तो जब भी ये पूरा का पूरा फॉर्म एक्शन में आएगा तो स्लैश एडिट पे जाएगा। ओके, और अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, मुझे क्या करना होगा कि ये पूरा का पूरा, सॉरी, एंटर द नेम। ओके, सो यहाँ पे मैं वैल्यू देती हूँ, कौन सी वैल्यू, जो जो भी आप एडिट करना चाहते हो वो वाली। सो वैल्यू इज इक्वल्स टू, place the curly bracket, double curly bracket. Okay, and inside that curly bracket what you have to do, you have to pass the data. So यहाँ पे नेम के लिए मुझे कौन सा डेटा है, दैट इज द डॉलर डेटा, बिकॉज डॉलर डेटा में हमारा पूरा का पूरा डेटा है और उसमें से मुझे नेम फेच करना है। दिस थिंग वी ऑलरेडी डिड व्हेन वी आर फेचिंग द डेटा। ओके, सो व्हाट आई डू हियर, ओके यहाँ पे मैंने नेम दिया, सेम एज इट इज यहाँ पे मैं ईमेल दूंगी। और ये डॉलर डेटा कहाँ से आया, आपने ये रेस्टो कंट्रोलर वाले जो फंक्शन है उसमें आपने डॉलर डेटा पास किया है, इसलिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट विल गिव यू दी एरर। ओके, सो ये याद रखना है आपको। ओके, अब क्या करना है कि जब भी आप एडिट करते हो तो वो आईडी होता है वो भी सबमिट होना चाहिए, राइट। सो आईडी है वो आप क्या कर सकते हो, एज अ हिडन रख सकते हो, कि आईडी पूरा का पूरा हिडन रखो, क्योंकि उसकी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा हमको प्राइमरी की है इसलिए कोई उसको एडिट नहीं कर सकता। बट आईडी आपको पास करना पड़ेगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट प्लेस हियर टाइप एज अ हिडन, यहाँ पे हिडन रख दो ताकि आगे एडिट करने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे आईडी रख दो, यहाँ पे आईडी रखो। और आईडी,
Now go back to this one. Okay, coming back to here. Go to the edit one. So I'm just editing this one. Check it out. Is there any error or not? Okay, as you can see here, my data is coming. Okay, and just a second. Half of the data is coming, half of the data is some. Okay, I have to place this entire thing into double curly bracket. Otherwise, it will not fetch any entire data. It will interpret as a variable, not as a string. So place double inverted comma because values are always inside the double inverted comma. Okay. Okay, save it and just check it out. For this 101, my whole data is coming or not. Okay, as you can see here, जब भी मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ, गो बैक टू द लिस्टिंग पेज, देख लेते हैं सारी की सारी रो में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, गो टू दिस लोड्स 105. ID is hidden, that's why it is not display here. Yes, my data is coming successfully. तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे एड रेस्टोरेंट की जगह मैं ये टाइटल चेंज कर देती हूँ, दैट इज द एडिट रेस्टोरेंट. ओके, सो यहाँ तक हमारा आधा स्टेप हुआ. हमने क्या किया, जब भी एडिट पे आप क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा एडिट फॉर्म में डेटा वो सक्सेसफुली आ जाता है. अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे ये ईमेल एड्रेस में लाइक loads123@gmail.com करना है और एड्रेस है वो चेंज करना है. ओके, वो कर दिया. उसके बाद मैं सबमिट करूंगी तो ये डेटा पूरा का पूरा अपडेट हो जाना चाहिए. कहाँ पे, मेरे डेटाबेस में. और जब भी मैं लिस्टिंग पे यहाँ पे अगेन कम बैक टू दिस लिस्टिंग पेज, यहाँ पे भी वो मेरा डेटा है वो पूरा का पूरा अपडेट हो जाना चाहिए. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज द अपडेट. सो डोंट कंफ्यूज हियर. यहाँ पे एडिट वाला जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, आपका जो फॉर्म है उसमें डेटा है वो फेच कर रहा है. जो भी डेटा आपको एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मुझे एडिट करना है, तो ये फॉर्म में पूरा का पूरा आपका डेटा है वो फेच कर रहा है. और अपडेट फंक्शन है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा है वो अपडेट करेगा. कहाँ पे, डेटाबेस में. Are you clear on that point, or is there any doubt what is the difference between this edit function and update function? अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो. और मैं बहुत ही लाइक एक लाइन समझाने के बाद दूसरी लाइन ऐसे ही जाती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अगर still you have any queries, just let me know. Okay. So till here, what we do, we just fetch the data successfully, right? When I just click on the submit after updating or modifying this data, and when I just click on the submit, my data is updated inside this database also. So for that, I'm just creating my update function. So it is updating the record. And this one, this edit function is fetch the data through ID inside the form, inside the form format. Okay, so as you know, you are going ahead with the submit, so you are updating your data. So what you have to do, you have to pass the request inside this update function. Okay, so request object I have to pass request $req. Okay,
अब देखते हैं कि रिटर्न कर दो आप, जो भी डेटा है वो रिटर्न कैसे करोगे। $REQ इनपुट, और इसके लिए मुझे राउट भी बनाना पड़ेगा। सो गो बैक टू योर web.php। ओके, पोस्ट वाला कॉपी कर लो, बिकॉज यहाँ पे जो एड में आपने किया, जो इंसर्ट में आपने किया, सेम आधा तो पार्ट सेम एज इट इज, आपका जो एडिट वाला था और इंसर्ट वाला था वो सेम ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे पोस्ट में मैं यहाँ पे देती हूँ एडिट। ओके, और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करती हूँ अपडेट। ओके, ये अपडेट फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा एडिट पे। सो ये क्या है, हमारी फॉर्म की एक्शन है। जो भी यहाँ पे आप देते हो वो आपको एज ए एक्शन आपको फॉर्म में पास करनी पड़ेगी। सो एज यू कैन सी हियर आई ऑलरेडी पास, दैट इज द एडिट। Just check it out. For example, I'm just modifying it as a 1, 2, 3. So this modified value I get or not, or is there any error? Just check it out. Okay. So as you can see here, my updated value, that is the temp restaurant 1, 2, 3 is coming. That means my data is updated. बट अब मुझे क्या करना है, ये डेटा जो भी अपडेट हुआ वो मुझे डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटा है वो अपडेट कर देना है। तो ये मेरी यूजर की वैल्यू थी, और अब मुझे ये मॉडल के इंस्टेंस में जो भी आपने यहाँ पे किया, जो भी आपका ऐड वाला कोड है, जस्ट कॉपी इट। ओके, बिकॉज ये सेम कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस वन। Okay, what you have to do, you have to fetch the data that is input by your users, and after that you have to go ahead with this entire thing. But यहाँ पे एक चीज है वो डिफरेंट होगी, क्या होगी कि जब भी आप कोई भी डेटा है वो फेच करोगे तो रेंडमली अपडेट नहीं करना है आपको, जो भी उसका आईडी है उस हिसाब से अपडेट करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। Okay, so don't create directly the instance of it. What you have to do here, one change is there, you have to find the ID. Okay, so like restaurant, okay, colon find। अब ये आईडी कहाँ पे होगा, बिकॉज यहाँ पे आईडी तो दिख नहीं रहा, तो आईडी कहाँ पे होगा, यहाँ पे कैसे आ रहा है, बिकॉज वी आर गिविंग आईडी एज अ हिडन फिल। अब पता चला क्यों मैंने वहां पे हिडन फिल किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपडेट करना है रिकॉर्ड, और अपडेट करने के लिए मुझे आईडी की जरूरत होगी। तो अगर मैं पास नहीं करूंगी ये फॉर्म में तो मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाती, इसलिए मैंने वहां पे हिडन फॉर्म में रखा था। ओके, put and then after id। ये कौन सा आईडी है, जो मैंने हिडन में रखा था। ओके, तो आपने पर्टिकुलरली जो एक रिकॉर्ड था वो फाइंड कर लिया, जो एक रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है वो आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद तो सेम एज इट इज, जो भी नेम आपने मॉडिफाई किया वो मॉडल के इंस्टेंस में आ जाएगा, ईमेल उसमें आ जाएगा, एड्रेस उसमें आ जाएगा, और सेव कर दो। और उसके बाद फ्लैश लगा दो। ओके, ये वाला ले लो, ऐड वाला जो है वो। ओके, फ्लैश सेशन, और यहाँ पे रेस्टोरेंट एडिटेड successfully, and then redirect to the listing page. Okay, just refresh it। Go to the listing part। Go to the Imperial Palace, that one। So I'm updating this entry, just check it out, is it working correctly or not? So instead of, okay, I'm just changing the email address, like Imperial Palace 123456 @gmail.com, and I'm just submitting it।
So as you can see here, my restaurant edited successfully. That flash session is display. I'm just closing it and my data is already updated. Previously, it was the imperialpalace@gmail.com. You can see here imperialpalace@gmail.com. Okay. Now I'm just refreshing my database also. So just check it out. It is working properly or not. Just a second. It is taking time. Okay, so as you can see here, like here, your entire CRUD operation is completed. Like you can delete easily through Laravel operation. You can edit it, update it. Okay, you can insert it, you can select it. Okay, so this entire operation will be performed in your project. Okay, now just check it out in your database also. Your entry is updated. Okay, so that way your entire CRUD operation in your Laravel is completed. Now we are going ahead because in real time we need the register and the means registration form and login form, right? So I'm just giving the information of it and then we move to the middleware part. Okay, so that way we can complete this entire Laravel practical. Okay, so what I'm doing here, I'm just going to this register part. So I already created one form. That is nothing. I'm just taking it from the bootstrap. So don't worry about it. Okay, just go to the register.blade.php file. Okay, so what are there? That is the name, email, password, and contact number. This four field I want. Okay, so when you work with the register, when you want to register any user, at that time you need a users table. So what you have to do, you have to create a users table. Okay, so what is your first step when you work with the registration and login part? You need to create a users table and inside that name, id is by default primary key and auto increment, name, password, email, and contact number. So here name, email, password, and contact number is there. Okay, and this form is I just copied from the add.blade.php and I just modified, so don't worry about it. Okay, but कौन सा field है वो आपको याद रखना है, name है, email है, password and the contact number. Okay, now how I can just display this form in my app, that when I click on the register. So for that I need to go for the route of it. Fine, so I'm just going to the web.php file. Just a second. Okay, here I need to create a route for it. So I'm just going to create a route for the register. So first I'm just creating the view for it because it is a view file and till here there is no function is required. So what I'm doing here, I'm just creating a view. Sorry. Register, and the name of that file is also register.
Okay, and go to the layout.blade.php because their menu bar is there. Okay, and here I just want to give the href, that is the register. Okay, okay, refresh it. Okay, click on this register. Okay, so my form is display here. User registration form will be there. Okay, just check it out, add.blade.php form. Okay, where I apply the view container class. So I'm applying it here. So it will look proper. Okay, so it is looking perfectly now. Now what I have to do, I have to, whatever the name of user, email address, password and contact number are there, I have to insert it inside my users form. So some of the entries are there, and when password is inserted, it is not directly display in your database. It must be in the encrypted form. So how we can do this thing? So for that we need to create one function, that is the register function. So come back to your resto controller dot php file. Okay, and just here create register function, and where I need the request $req. Okay, inside that, first, what I'm just trying to avoid, that is it returning my entire input or not. So I'm just checking out $req, then input. Okay, coming back to here. You can put the validation here also, that is up to you. Okay, yes, route for this function is still remaining because we didn't call this function. So what we have to do, we have to go back to the web.php file and we need to create a route for it. Otherwise, this function will not call. Just a second. Okay. Going to the web.php file. I'm just copying this entire thing. ये post वाला जो भी है वो copy कर लेती हूँ. Okay, here I need register. Here also I'm applying the register. Save it and just go ahead. Okay, as you can see here, your data is coming. Whatever the data, like Krishna is there, Krishna at gmail.com, password, that is currently, it is not in encrypted format. But we need to encrypt this password and then after it will store here. So for that, what we have to do, we have to go into the register function, and where we need to encrypt our entire password and then after we have to store it. Okay, so what I'm just creating here,
Remember one thing, when you work with the registration and the login part, at that time you require the user model. Now, what is this user model? So it is always by default in your entire project. This user model is always there. So don't worry about it to create it. Like restaurant model, we need to create it. But this user model is always there. So what you can do, you just copy this one, because timestamp false we need to apply. ओके जो भी आपका यूजर मॉडल है उसके साथ आपका कौन सा टेबल अटैच होना चाहिए, सो दैट इज द यूजर्स. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू हियर, I have to give the users. That same steps we already follow in this restaurant.php. Okay, apart from that we need to import that model, right? So how we can import that model? So for that, just go here, copy this one, paste here. Apart from that, this one is user. ओके, सो मैंने मॉडल जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था वही यूज किया है, एंड दैट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इन एवरी प्रोजेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज देयर एनी डाउट टिल हियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है? अब हम रजिस्टर फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे और यूजर को रजिस्टर करेंगे. टिल हियर इज देयर एनी डाउट? यस और नो? ओके फाइन. सो वी आर गोइंग बैक टू द रजिस्टर फंक्शन. सो यहाँ पे मैं पहले क्या करती हूँ, मेरा जो यूजर वाला मॉडल है वो यूज करती हूँ और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करती हूँ, राइट? तो यूजर न्यू, एंड विच मॉडल आई एम यूजिंग हियर, दैट इज दी अगेन यूजर. ओके, बिकॉज जो भी हमारा यूजर्स वाला टेबल है वो किस मॉडल के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज द यूजर मॉडल. ओके, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, जो भी हमने ये वाला पूरा का पूरा सेम एज इट इज हमको यहाँ पे यूज करना है. सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर दिस वन, आई एम जस्ट कॉपिंग इट. जो भी यूज हमने इनपुट लिया वो हमारे यूजर डॉलर यूजर में हम override करा दे. Okay, now name is already there, just check it out the field of it. First is name, then after email, so I'm just going ahead with the email part also. ओके, सो ये वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो यूजर ने इनपुट किया है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हम मॉडल में इंपोर्ट करा रहे हैं. नेक्स्ट इज विच फील्ड इज देयर, कॉन्टेक्ट. लास्ट वन इज पासवर्ड. बट अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप पासवर्ड यूज कर रहे हो, जो भी आप पासवर्ड है आपको सेव कराना है, तो वो पासवर्ड आपको एनक्रिप्ट फॉर्म में स्टोर करना है, ना कि आप डायरेक्टली कोई भी पासवर्ड है वो डेटाबेस में स्टोर कर लो, अदरवाइज देयर विल बी नो सिक्योरिटी. ओके, सो जो भी आप ये है उसको क्या करोगे आप, एनक्रिप्ट फंक्शन. सो एनक्रिप्ट फंक्शन विल बी देयर. ओके, आई एम जस्ट हियर गिविंग द पासवर्ड. ओके, सो एनक्रिप्ट फंक्शन विल बी देयर to encrypt your entire field. But ये encrypt function कौन से पैकेज में है? So that is always inside the crypt. So like whenever we work with the session, at that time we have to write here session, or we have to import it, right? So likewise, whenever you want to go ahead with the encryption and decryption part, at that time you want to import the script. Inside the script, encrypt function will be there. So what I can do here, I just importing this. So use script. Okay. And after encrypting this entire password, what I have to do, I have to just save this. That's it. Because save function is used to
insert your data. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, जब भी मेरा कोई रजिस्टर यूजर हो जाता है उसके बाद मुझे होम पेज पे रीडायरेक्ट करना है. ओके, तो जब भी मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट करती हूँ तो अभी क्या है कि मेरे होम पेज में कौन सा यूजर है, वो लॉगिन है, वो नहीं दिखा रहा. Like whenever you work with the Gmail and any other website, at that time one message will be there like welcome Krishna or welcome whatever the username will be there. Okay, so if I want to provide like here uh, welcome Krishna after registration, so for that I have to put this entire name inside my session variable. Okay, so how I can do this thing? So here actual session concept will be there. So for that you can use the session function, and inside that put function will be there. Okay, and inside this put function you can use this user and put this value, that is the name. So what is the name of it? That is here. तो यहाँ तक आपने क्या किया कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ उसके बाद मुझे पूरा का पूरा जो भी यूजर का नेम है वो सेशन वेरिएबल में स्टोर करना है, ताकि जब आप लॉग इन करो उसके बाद वेलकम कृष्णा या जो भी आपको मैसेज देना हो वो आप दे सकते हो. और उसके बाद आप रिटर्न कर दो और रीडायरेक्ट कर दो. कौन से पेज में? होम पेज में. So this is your entire registration function. Okay. So just check it out. Route is already created for that inside the web.php. Now just check it out. Register.blade.php inside the action. Okay, register is already there. Okay. Now just go ahead with the registration part. Whatever name you want to give, you can give. Okay, just check it out. Is there any step is missing or not? So this error will help us. Okay. Okay, fine. In contact number, there is a range, and that range is out of range, so I cannot give this one simple or any small version. This validation you can put here, and you can also increase the data type size in your database, so you can resolve this one. Okay, so I register successfully, but here I want to display here like welcome Krishna and that way. So this is inside your layout.blade.php, and inside that I have to display this one like whenever the user is registered or login, welcome, then username will be displayed there. Okay, so I'm just going to the layout.blade.php file. Okay, it is here. Till here, if you have any doubt, I'm just giving 1 minute so you can raise your doubt. Just a second. Okay. Okay, home, listing, add restaurant, and after that, I just want to display this thing. Like if my session is set, that means my user is already registered, then I can just write like welcome Krishna, and then after logout button will be there. And if my particular user is not login, then definitely login and register option will be displayed. So how I can do?
So if session, and then just you can use the get function, which, so user, that is always set, fine. And inside that, I'm just copying this one. Okay, here, welcome. Sorry. Welcome, Krishna. So whatever the name is there, that always display inside this one. So I'm using double curly bracket and inside that this one. So that value will be displayed successfully, and after that log out option will be there. Okay. So again, copying this one, and here instead of login, log out will be there. And otherwise, if my user is not already logged in, then in else part, login and registration button will be there, and end if. So this kind of options you can provide here. Welcome. Just a second. I have to check it out. This, okay, here unnecessary bracket is there. Yes, just a second. I already log in or registered through Mahi. That's why welcome Mahi is coming. Okay. This is my registration code. That is the register.blade.php file. Nothing I do. I just create one form, as you can see here. And inside that, name field is there, email field is there, password is there, and contact number. That form you can copy from this add.blade.php file, and you just update the this one placeholder and the name. That's it. इन रजिस्ट्रेशन जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है उसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक फॉर्म क्रिएट किया. उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे फंक्शन बनाना है. ओके, ये मेरा पूरा का पूरा रजिस्टर वाला फंक्शन है. मैंने क्या किया, ये मेरा यूजर मॉडल है. जब भी आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के साथ वर्क करना चाहते हो तब आपको यूजर मॉडल बाय डिफॉल्ट मॉडल है. अगर आपको कोई और मॉडल क्रिएट करना है दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अगर है तो आप क्यों दूसरा क्रिएट करोगे. ओके, देन आई एम यूजिंग दिस यूजर मॉडल. जो भी नेम, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो यूजर ने इनपुट किया है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपका मॉडल का डिफरेंट इंस्टेंस है. तो ये डेटा पूरा का पूरा आपके डेटाबेस में स्टोर होगा. तो आप क्या कर रहे हो कि यूजर ने जो भी डेटा इनपुट किया वो आप मॉडल में ओवरराइट करा रहे हो यूजिंग दिस डिफरेंट स्टेटमेंट. और जब भी पासवर्ड की बारी आती है तो आप उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करा रहे हो. और सेव फंक्शन इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट द डेटा. एंड एट लास्ट यहाँ पे आपने क्या किया कि पूरा जो नेम है वो आपने यूजर वेरिएबल में एज अ सेशन वेरिएबल आपने पुट कर दिया, ताकि जब भी आप लॉग इन और रजिस्टर करो, वेलकम जो भी यूजर का नेम है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए. तो ये वाला पुट फंक्शन इज ऑलवेज यूज टू पुट सम वैल्यूज इनटू द सेशन. ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो आपका जो भी नाम होगा वो सेशन में स्टोर कर देगा. एंड देन आफ्टर यू रीडायरेक्ट टू द होम पेज. इज इट क्लियर एवरीबडी? Fenil, is it clear? Fenil, as I already told you, here you don't have to write any query. Only this save function is used to insert entire data. Are you getting my point? That is the biggest benefit of it. Only using this save function, or when you want to delete the data, you don't require to write any query here. Only this save function will insert your data in your database. Only this delete function will use to delete your data. And
whenever you work with any of the different function, you don't have to write any query. Yes, that is the biggest benefit of using the model. Model will interpret itself. Okay. That's why we are using the model. Model will interpret itself, like we don't write any query here, but we have some kind of functions like save function. That means you have to insert this data. Okay, fine. So that is all about the registration part. Okay, same way you can go ahead with the login part. You can see the code that I already uploaded where I just check it out, like my email ID or whatever the password is matching, then I'm just login. So that part you can see from that. One thing that I want to tell you regarding the middleware. Okay, so that last part is remaining. So how you can go ahead with the middleware part. So I'm just coming back here. Okay. I'm just creating the middleware. So PHP artisan make middleware. This is the function to create a middleware. And I'm using the custom auth as a middleware. Okay, that is up to you. Whatever the name you want to give, that is not compulsory. So I'm creating the middleware. Okay, middleware is created successfully. Now why I'm creating the middleware? Because जब भी आप कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा है वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, अगेन आई हैव टू रीस्टार्ट माय सर्वर php artisan. So okay, it is starting. Okay, that part I already told you. For that you have to go into the model part and inside this config file. Okay, here inside the config database.php file is there. Okay, and here the different database support will be there, and for that you have to go into the env file. Okay, so whenever in your project you cannot see any of that function definition, but definitely you can read out the lab manual where you can find the function definition, how we can use the different function for that. Okay, here you will not find it, but in lab manual, in documentation part, it is already there. Okay, fine. Now I already create the middleware, but where I can find this middleware? Okay, so go into the app folder http, and inside that middleware is there, and my custom auth.php, this middleware I already created. नाउ एक चीज याद रखो, जब भी आप मिडलवेयर के साथ वर्क करते हो तो आपको ये पूरा का पूरा मिडलवेयर है वो आपको कैसे यूज करना है. सो देर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मिडलवेयर. अगर आप ग्लोबली यूज करना चाहते हो, जो मिडलवेयर मीन्स यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर वेबसाइट और योर यूजर, और जो भी अटैक हो रहे हैं आपको वो रिस्ट्रिक्ट करना है, तो पूरा का पूरा मिडलवेयर है वो आप ग्लोबली अप्लाई करना चाहते हो या ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हो, आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा kernel.php फाइल. कहाँ पे होगी? मिडलवेयर में. मिडलवेयर में जाओगे तो यहाँ पे आपको kernel.php फाइल दिखेगी. तो अगर आपका ग्लोबल मिडलवेयर है तो ये उसका स्टैक है. आपका जो भी custom.auth.php है, तो ये मिडलवेयर हम यूज कैसे कर सकते हैं? हमने बना तो लिया, तो उसके लिए आपको kernel.php फाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो ये कोई बेनिफिट ही नहीं होगा इसको क्रिएट करने का. ओके, सो यहाँ पे जाओ तो ग्लोबल आएगा, फिर आएगा राउटेड मिडलवेयर और ग्रुप मिडलवेयर. ग्रुप मिडलवेयर मीन्स आप कोई फॉर एग्जांपल आपको जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो ये 3 पेज पे लगाना है, ये 2 पेज पे आपको लगाना नहीं है, तो उसके लिए या आप ग्रुप मिडलवेयर यूज कर सकते हो कि कोई कोई लिंक में आपको अप्लाई करना है, कोई कोई पेज में आपको नहीं अप्लाई करना है, देन यू कैन यूज दिस ग्रुप मिडलवेयर. इन अवर केस ऑल्सो वी आर यूजिंग दिस ग्रुप मिडलवेयर. और तीसरा है वो राउटेड मिडलवेयर है. अगर आपको इंडिविजुअली यूज करना है तो आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे डिफरेंट काफी सारे क्लासेस है. सो हम
ग्रुप मिडलवेयर यूज कर रहे हैं जहां पे उसका नेम है वेब। अब हमारा जो कस्टम ऑथ डॉट पीएचपी है वो हमको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा पाथ देना पड़ता है। कॉपी दिस फर्स्ट लाइन एंड पेस्ट एट लास्ट, आपको जो भी है वो लास्ट में ही पेस्ट करना है। ये पूरा पाथ है ऐप एचटीटीपी मिडलवेयर, और उसके बाद हमने जो क्रिएट किया दैट इज द कस्टम, उसका नाम दे दो कस्टम ऑथ दिस। so this way we can register our own created middleware. are you getting my point? और middleware क्यों यूज करते हैं? आइदर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने हो, आइदर आपको कोई कंडीशन चेक करनी हो कि अगर यहाँ पे यूजर ने आप जैसे भी देखोगे ना, तो अगर आप ऑलरेडी लॉग इन हो फिर भी आपका जो लॉग इन पेज है वो अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप रजिस्टर पेज यहाँ से एक्सेस करना चाहते हो तो इजीली आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकते हो, दो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर एंड लॉग इन। आप देख सकते हो कि वेलकम माही है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी लॉग इन और रजिस्टर्ड। देन ऑल्सो यूजिंग दिस यूआरएल यू गेट टू यू ट्रैवर्स टू दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये हमको रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम मिडलवेयर यूज करते हैं। हम कैसे यूज करते हैं? तो पहले हमने पूरा का पूरा यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, आप ग्रुप मिडलवेयर यूज करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेब डॉट पीएचपी फाइल में ये पूरे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। सो कमिंग बैक टू द वेब डॉट पीएचपी फाइल, कहाँ गई मेरी? अरे ओके, व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग। अभी के लिए आप कॉपी कर लो। ओके, अब मुझे क्या करना है, हाउ आई कैन अप्लाई दिस मिडलवेयर। जो भी मेरे मिडलवेयर है वो मुझे सारे के सारे राउट है उस पर अप्लाई करना है। अगर एक राउट पे अप्लाई करना है देन इट इज ऑल्सो फाइन, बट मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा जो राउट है उस पर अप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए आपको ग्रुप यूज करना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग द ग्रुप मिडलवेयर। उसके अंदर आपका नाम दे दो, जो भी मिडलवेयर का नाम है। तो मेरे केस में मिडलवेयर कौन सा ग्रुप मिडलवेयर यूज कर रही हूँ, तो वेब, आपने देखा होगा मैं वेब वाला यूज कर रही हूँ। ओके, सो जस्ट गिव द नेम ऑफ इट। ओके, उसके बाद फंक्शन लगा दो and inside here you just paste every route. Okay, and just give the semicolon here. अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका मिडलवेयर अप्लाई हुआ है कि नहीं? तो आपका जो भी मिडलवेयर है दैट इज द कस्टम ऑथ, ये वाला कहाँ पे गया, जस्ट अ सेकेंड, गो टू द एचटीटीपी मिडलवेयर, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे रिटर्न कर दो कुछ भी, ताकि आपको पता चले कि मेरा मिडलवेयर सारे के सारे रूट्स पे अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, चेक इट आउट। Trying to get property of non-object, just a second. I'm just closing unnecessary file. ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया, अप्लाई भी कर दिया उसको। ग्रुप एक बार चेक कर लेती हूँ, वेब फंक्शन, ओके, कर्नल डॉट पीएचपी में उसको अप्लाई भी कर दिया। ओके, इको लगा दो। Okay, fine, it is working. Don't go ahead with the return part. It will only return the object. Okay, so as you can see here, my middleware is applied into home page also, inside the listing page also, add restaurant also. Okay, in all the pages it is applied successfully. अब मुझे क्या करना है कि जो भी मैंने मिडलवेयर देखा वहां पे मुझे चेक करना है कि अगर मेरा पाथ लॉगिन और रजिस्टर है, ओके,
अगर मेरा पाथ लॉगिन और रजिस्टर, अगर कोई यहाँ से यूजर है वो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर देता है, बट मेरा जो यूजर सेशन है वो ऑलरेडी अभी उसमें कोई वैल्यू स्टोर है, दैट मीन्स आई ऑलरेडी लॉग इन इट, तो मुझे ये पूरा का पूरा रीडायरेक्ट करना है कौन से पेज में, होम पेज में। अगर मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ और यूजर यहाँ यूआरएल से एडिट करना चाहता है और कोई पेज एक्सेस करना चाहता है, तो मैं उसे एक्सेस करने नहीं दूंगी, वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, आपके होम पेज में। और अगर वो यूजर है वो ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है या लॉग इन नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल रीडायरेक्ट टू द लॉग इन पेज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एज ऑफ नाउ। ओके, तो मुझे पहले तो पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं जो भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो कौन सा पाथ है, वो पाथ है उसके लिए हम ये यूज करते हैं, दैट इज द पाथ फंक्शन। इफ यू learn this thing in your theory or in your lecture, then you definitely get to know. Okay, so I'm just returning this one, or I'm just echoing this one. Okay, as you can see my path is coming. So इस हिसाब से मैं चेक करूंगी कि अगर मेरा पाथ रजिस्टर है या लॉगिन है, तो अगर मेरा यूजर सेशन है वो ऑलरेडी सेट है, तो वो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो होम पेज पे ही रहना चाहिए। तो उस हिसाब से आप रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वाई वी आर यूजिंग दिस मिडलवेयर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट? क्यों हम मिडलवेयर यूज कर रहे हुए? ताकि कोई यहाँ पे, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे यूआरएल पे अगर आप अटैक करोगे तो वो इजीली अटैक हो रहा है, बट मुझे ये नहीं करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, इसलिए मैं मिडलवेयर यूज कर रही हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रही हूँ। आर यू गेटिंग ऑन दिस पॉइंट एवरीबडी? ओके, फाइन। सो मैं क्या करती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि ये मेरा पाथ है वो सक्सेसफुली आ रहा है, तो मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, बिकॉज मुझे ये यूज करना है। सो आई एम स्टोरिंग इट इनटू द डॉलर पाथ। Okay, now I'm checking if dollar path is double equals to either it is a login, okay, or maybe register. Copy कर लो. Oh, sorry. Okay. अगर आपका पाथ है वो इधर रजिस्टर है और लॉगिन है, उसके अलावा ये भी देख लो कि आपका जो सेशन है वो सेट है कि नहीं. So and, because it is a compulsory you have to check, so that's why I'm using the and. Use the session, okay, then get and user. Yes, is there any doubt, student? Any doubt? ओके, फाइन। यहाँ पे मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा पाथ है वो लॉगिन है या तो फिर रजिस्टर है, और मेरा जो यूजर का सेशन है वो सेट है, ऑलरेडी सेट है, दैट मीन्स किसी ने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, तो मुझे लॉगिन या रजिस्टर पेज में नहीं जाना चाहिए। मुझे कहाँ पे जाना चाहिए? डायरेक्टली आई कैन गो इनसाइड माय होम पेज। अगर मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, देन व्हाई आई जस्ट गो अगेन एंड अगेन टू माय रजिस्टर पेज? ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर लॉग इन और रजिस्टर है, बट आप ऑलरेडी, आपका जो सेशन का जो वेरिएबल है ऑलरेडी सेट है, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू गो inside the register or login page. You have to compulsory redirect it into the home page. Okay, so as of now just check it out. अगर मैं already log in हूँ, that means welcome my means I already log in. Okay, the session variable is not accessed here because I didn't use it, so make sure you just use it. Okay, then after it will work. Okay, as you can see here, I just go into the register part, but that form is not display. It is redirecting it my home page. If I'm going into the login, but that page is not there, I already create that page. Just a second, I'm just giving the link to it.
This one I already created. Fine. It is nothing but it is your email and password. Nothing more than that. I'm just creating the route for it. Okay, I'm just seeing that login. As you can see, it is coming again, redirecting to my home page. So this way you can restrict the attacks. Okay, अगर आप ऑलरेडी लॉग इन हो तो आपका होम पेज ही दिखेगा. आप अगर लॉग इन और रजिस्टर पेज से एक्सेस करना चाहोगे फिर भी आप नहीं कर पाओगे. तो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग द मिडलवेयर. अगर दूसरी कंडीशन ये भी आती है कि ये वाला कॉपी कर लेती हूँ एलसिफ में. कि अगर आपका लॉगिन और रजिस्टर वाला पेज नहीं है और आपका जो यूजर सेशन है वो भी सेट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू योर login page. So that way I can go ahead like path is not equals to login and okay and मेरा जो भी सेशन है वो भी सेट नहीं हुआ दैट मीन्स आई एम यूजिंग द एक्सप्लेनेशन मार्क सेशन hope resolution operator get user. ओके ये भी नहीं है. और दूसरा ये वाला कि लॉगिन नहीं है तो मे बी रजिस्टर भी हो सकता है. ओके और यूजर सेशन सेट भी नहीं हुआ तो उस केस में मुझे क्या करना है. उस केस में मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करना है. मुझे होम पेज में नहीं जाना चाहिए. रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज. ओके जस्ट अ सेकेंड. अभी मुझे क्या करना पड़ता है कि ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ तो लॉग आउट वाला एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ ताकि मेरे जो भी सेशन है वो फ्लश हो जाए और मैं अच्छे से फिर से मैं लॉग इन कर पाऊँ. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ. रेस्टो कंट्रोलर. Okay, I'm just creating one function that is the logout. Passing the request. ओके जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूं तब ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन वाला यूज कर सकते हो. डायरेक्टली ऑथ इज यूज्ड फॉर लॉग आउट द एंटायर थिंग. ओके सो आपको यहाँ पे ये इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा. ओके उसके बाद आपका जो भी सेशन है वो फ्लश कर दो ताकि कोई भी डेटा उसमें स्टोर ना रहे. तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ फ्लश फंक्शन. और उसके बाद मैं रिटर्न कर देती हूँ. रिटर्न रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज. लॉग आउट के बाद कौन सा पेज आना चाहिए. लॉगिन. और अभी के लिए मैं रजिस्टर रखती हूँ क्योंकि अभी लॉगिन वाला जो फंक्शन है वो हमने बनाया नहीं है इसलिए. ओके आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट. ओके ओके देयर इज टू टाइम फंक्शन. और जो भी मेरा लेआउट वाला पेज है उसमें भी लॉग आउट लिखना पड़ेगा और इसका राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा. यहाँ पे लॉग आउट लिख देती हूँ. ओके राउट के लिए मुझे जाना पड़ेगा.
फंक्शन कॉल कर दिया. Okay. Okay, as you can see, I just go log out. So registration form will be display here. I'm again. Okay, अभी मेरा सेशन है वो फ्लश हो गया, राइट? तो मैं देखती हूँ कि लिस्टिंग वाला पेज मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. As you can see, it is redirect to my login page because I just put this code in my middleware. जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर मैं लॉगिन नहीं हूं तो मेरा ये कोई भी पेज ओपन नहीं होना चाहिए. As you can see, I'm not login. So user login will be display here and registration form will be display here. Are you getting my point? This way you can use this entire middleware. Is there any doubts in this entire project? You need any of the repetition thing? Okay, I already uploaded this entire project. Just go ahead. I will provide you 1 week. Only the data part you have to change. You can, I'm using the restaurant data. You can use the other data. Other things are same as it is. And prepare it in 1 week. All the students. Is it clear? Okay. And regarding the practical 5, that is the Node.js, in your lecture, sir will also explain everything. So make sure you attend it very well. That is your practical 5. I will give you the demo in the next lab session if possible. Otherwise, that program is finalized for you. Okay, so make sure you don't miss it. And if you have any doubt, just raise your doubt. Otherwise, we can conclude here. Okay, then I'm just taking your attendance. Balkrishna. Okay. Dev. Dev Kevalya. Okay. Terya Trivedi. Fenil. Jaivin. Jinal. Okay, Jaivin. Okay, Jinal. Komal. Lata. Mohit Raj. Nikhil Kumar. Nishant. Palak. Parth. Rajkumar. Okay. Riddhi. Rutvi. Sagar. Sherin. Sonal. Akshita. Akshita. Okay. One announcement for the B batch student that you have a Thursday lab, right? That lab is not there because it is rescheduled today. So only for the B batch students, you don't have a AWT lab session this Friday. Only for this Friday, okay? Pass this information. I already put the message in your group. Okay. If you have any doubt, you can mail me anytime. Thank you all. Have a nice day. You can lab the meeting.